अभी सोचा है कि मसूरी टू देहरादून आप 15 मिनट में पहुंच सकते हैं? नहीं? Well, Uttarakhand plans to make a longest ropeway between the two cities ever in India. So, Mussoorie and Dehradun to be connected by India's longest ropeway measuring 5.5 kilometers within the next 3 years. वैसे जो मसूरी और देहरादून के बीच का टाइम है, ट्रैवल टाइम है, दैट इज अराउंड 1.5 आवर्स, जिसको ये रोपवे 15 मिनट्स में कवर करेगी. ऑल्सो विद इट्स डायमंड कैबिन्स, जो 10 सीटर डायमंड कैबिन्स हैं इनके, उससे 1300 पैसेंजर्स पर आवर ईच साइड ट्रैवल कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है वीजा से रिलेटेड. दिवाली vacations 2023 are round the corner and here's how to get the visa processing right. So इस दिवाली सीजन में एक ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई डिमांड देख रही है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल की. एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि एयर फेयर बढ़ रहा है, एकोमोडेशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है, बट ये डिमांड तो है दिवाली के सीजन में. तो कुछ चीज़ें जो हम भूल जाते हैं अमंगस्ट द प्रिपरेशन फॉर द हॉलीडे is visa application process. So here are few things to keep in mind while applying for your visa. First of all, you should get an early start on your visa application process. तो जिस तरह से आप एक मूवी, ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए पहले से टिकट्स रिजर्व कर लेते हैं so that you get the best seats, उसी तरह से आपको ये प्रोसेस वीजा का भी जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए अर्ली ऑन. तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि 180 days prior to the intended day of travel वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है. सो दिस इज अ गुड साइन, राइट? एंड ऑल्सो अगर आप वीजा प्रोसेस जल्दी से कर लेते हैं तो दैट इंश्योर्स द स्ट्रेस फ्री एंड हैसल फ्री ट्रैवल मोस्टली. नेक्स्ट, द थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज कि जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं उसकी टाइमलाइन, कितना टाइमलाइन लगने वाला है, किस टाइम फ्रेम में वो वीजा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, that differs from country to country. So it's best to do this कि आप उस कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार चेक करें कि आपको कितना टाइम लगने वाला है. ऑल्सो पीक सीजन के टाइम पे ये टाइम ज़्यादा हो सकता है, आपके वीज़ा प्रोसेसिंग को ज़्यादा टाइम लग सकता है. सो ऑल दिस यू शुड कीप इन माइंड so that you should not get any last minute surprises for your travel. The next thing is that you should keep in mind the role of external service providers like VFS Global, for example. So these companies which take care of your visa application, they do not influence the visa decision, right? कि आपको वीजा मिले या ना मिले, आपका अप्रूव हो या ना हो, ये इन कंपनीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. तो ये जो कंपनीज हैं ये बस गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस उनको फॉलो करती है, उनको अबाइड करती है. एंड थिंग्स लाइक कलेक्शन ऑफ फीस, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एनरोलिंग इन बायोमेट्रिक्स, ये सारे जो गवर्नमेंट के मैंडेट्स हैं उनको बस फॉलो करती है. तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में, विच यू कैन कंसिडर. द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव अ क्लैरिटी ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, राइट? So if you're unsure about the documents, which documents to be submitted, then you can check the country's official website where you want to travel. तो इसमें आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. So make sure you complete all the documents and also a printed checklist of all the documents that has to be submitted. Also you have to keep in mind कि कुछ countries होती हैं जो कि आपके पासपोर्ट की beyond the travel 6 months की वैलिडिटी डिमांड करती है. तो you should stick to that also. And also you should keep in mind that it's a legal matter. Visa application process is a legal matter, so you should not be caught off guard. I hope आपको ये न्यूज़ सुनने में मज़ा आ रहा है और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है about what's going on in the world. अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ जिनको आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और आपको बताना है कि ये वीडियोस इंप्रूव कैसे किए जा सकते हैं या किस तरह से ये और इंटरेक्टिव बन सकते हैं, या एनी आइडियाज दैट यू हैव अराउंड, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. आइए चलते हैं थर्ड न्यूज की तरफ, जो कि है सिंगापुर से. सिंगापुर विटनेसेस a surge in the arrival of Indian tourists. Singapore expects an arrival of 5 to 6 million tourists and locals at the Orchard Road for the 6-week festivity. Orchard Road is a place which is a hub for international hotels and global outlets. So in the next news, we come straight from Singapore to India. Jammu Kashmir's Kishtwar hosts
ski events to boost tourism and winter sports. The officials said that majority of the participants were women, underscoring the growing interest of girls and women in winter sports. In the next news, I will tell you about Tehri Acro Festival. It is India's first international aerial acrobat festival in Uttarakhand. This festival will allow around 150 world-renowned paragliders to take part in the competition. So it is basically a sport where there are a lot of aerial competitions and acrobatic shows. So this festival will kickstart a paragliding training program in which the interested people can participate, and especially locals. And this is going to happen around 24th November to 28th November. If you have an adventure bone in you, then you must block your dates for this festival. The next news is from Thailand. After Sri Lanka, Thailand announces a visa-free entry for Indian tourists from November 10. In a good news for travelers, Thailand will allow visa-free entry for Indian and Taiwan tourists for a period of 6 months, that is from November 10th to May 10th, 2024. This was told by a Thai official to Reuters. This year, Thailand is eyeing for 28 million tourist arrivals because the government thinks that it can offset the weak exports, leading to a crisis in their economic growth. The next news is about a research. 94% of Indians are inspired by movies or TV show destinations for travel in 2024. This research was conducted by a global travel tech platform, Skyscanner, with 1,000 Indian responders for as a sample size. According to this report, the latest travel trend in 2024 is set jetting. Set jetting means a rage of going to the filming locations of the movies and the TV shows that the person has seen on the screen. According to this survey, they have actually ranked the cities in terms of the most popular and the least popular. So the city that tops the list is Manali, that was shown in Ye Jawani Hai Diwani. Followed by it is Ladakh, which was shown in Three Idiots. And then the crown, which shows London. So London is the next city. And the last city is Paris, as shown in Emily in Paris. So let's quickly move on to the next news item. The next news is about Royal Caribbean Cruise. The Royal Caribbean Cruise is set to raise automatic service gratuity rates. इस क्रूज में दो टाइप के रूम्स हैं, एक है आपका जूनियर स्वीट्स और एक आपके स्वीट्स. तो जो जूनियर स्वीट्स या स्टैंडर्ड कैबिन जिसे कह सकते हैं, उसका रेट हुआ है $16 to $18. पहले $16 था, अब $18 हो गए. और जो स्वीट्स हैं उनका रेट है $18.50 to $20.50. ये जो ग्रेचुटी है ये अप्लाई करती है सारे इंडिविजुअल्स पे फॉर द स्टेट्स रूम कैटेगरी, एंड ये लगती है बेवरेजेस पे, स्पा एंड सैलून पे एंड मिनी बार आइटम्स पे. तो जो अगली खबर है वो भी क्रूज से रिलेटेड है. न्यू कार्निवल क्रूज लाइन शिप कंप्लीट्स अ मेजर माइलस्टोन इन कंस्ट्रक्शन. कार्निवल क्रूज लाइन के कार्निवल जुबिली शिप की एक नॉटिकल फीट अचीव हुई है, that they have completed the conveyance in Ems River in northwest Germany.